Hello, my dear students. Welcome to the fifth lecture of electric charges and fields. Today, we'll discuss the MCQ questions of Gauss law and applications of Gauss law. The first question in this topic from MTG Fingertips book. The surface considered for Gauss law is called. So, whenever we apply the Gauss law to find out the electric field due to a system, then in that particular case we need to consider a Gaussian surface. Clear? So while applying Gauss law, we need a surface, we need to consider a surface, and that surface is a Gaussian surface. So and that Gaussian surface will be a closed surface. Clear? And that Gaussian surface can be spherical surface or it can be a cylindrical surface. Clear? So here in this particular case, the surface that is chosen to apply the Gauss law is generally known as Gaussian surface, and nature of that surface will be different types. Clear? Nature of the surface can be a pillbox type or cylindrical type or spherical type. Clear? It depends upon the type of system that we are choosing, and that surface must be a closed one. Clear? So option C is the correct one. Moving to next question. Here in question number 82, this closed surface integral of electric field, closed surface, this is how will you read this one? Closed surface integral of electric field over a surface. So that means this, what does this closed surface integral of electric field indicates? It indicates about the flux. So how will you represent the flux through a surface? Flux through a closed surface will be nothing but, so closed, this is called closed line, closed surface integral. Here if we write S, then it is called closed surface integral E bar dot ds bar. So this is called flux. So flux through a closed surface is 0. What does this indicate? This indicate flux through a closed surface. Flux through a closed surface, and that flux through a closed surface is 0. Okay, if it is 0, then which one of these simply indicate that means which one which of the statement generally it's मतलब ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उसको इंडिकेट कर रहा है. क्लियर? So first statement is electric field inside the surface and on it is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस. अब मान लो कि फ्लक्स यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्लक्स 0 है. क्लियर? तो फ्लक्स 0 है, उसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फील्ड इनसाइड, अंदर सरफेस के अंदर में फील्ड 0 होगा, एंड ऑन इट, और सरफेस के ऊपर भी फील्ड 0 होगा. तो ऐसा कोई केसेस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ विल बी टेकिंग ए क्लोज सरफेस लाइक क्यूबिकल सरफेस. If I will be taking a cubical surface, then in that particular case, charge is residing at a very large distance. Clear? Charge is present. Let us consider a positive charge is present at a very large distance. Then in that particular case, the field lines will be parallel. In that particular case, the field lines will be parallel, and it will be passing through the given closed figure. Clear? Given closed cubical surface. So here in this particular case is the field lines here. These electric field lines are passing through the given surface. That means field inside the given closed surface is not 0. Electric field exists inside the surface. But here in this particular case, what will be the net flux through the surface? The net flux through this particular closed surface will be 0. How it will be 0? Because here in this particular case, the flux, the field lines here, the field lines which are entering, and these are the field lines which are leaving from the surface. Clear? There will be some field lines which will be entering through the left side of the surface, and some fields and same amount of field lines or same number of field lines will be leaving through the surface. तो जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है. तो उसका मतलब है फ्लक्स लेफ्ट साइड के सरफेस में जितना होगा, राइट साइड के सरफेस में फ्लक्स उतना ही होगा. तो लेफ्ट साइड के जो सरफेस है उसमें अगर फ्लक्स हम इसको मान लो कि
एंटर करा है तो इसको हम फ्लक्स, अगर मान लो कि नेगेटिव लेंगे तो फ्लक्स बाहर निकला है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना होगा, टोटल फ्लक्स विल बी सिंपली जीरो। क्लियर। सो ये वाला कॉन्सेप्ट, तो उसका मतलब है फील्ड इनसाइड या फिर सरफेस के ऊपर यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर। अगर फ्लक्स जीरो है तो फील्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा, फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करे तभी तो जाके हम इंडिविजुअल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो रहा है हम निकाल पा रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। इनसाइड द गिवन क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में चार्ज तो इन्फिनिटी में है तो हम इसको फील्ड को यूनिफॉर्म शो कर पा रहे हैं। तो अगर मान लो कि चार्ज यहाँ पे सरफेस के पास ही प्रेजेंट है, assume that we are taking a charge, taking a spherical closed surface, clear, or figure, and a charge is present over here, a positively charged particle is present over here, then what will be the field lines due to that positive charged particle? These field lines will be like this. Field lines will be away from the given charge. Clear. So that means here in this particular case, the number of field lines entering is 4 and number of field lines exiting is also 4. But inside the surface, closed surface, here consider this one as a sphere. Inside this sphere, these field lines are not parallel to each other. Clear. तो उसमें यहाँ पे ये चीज़ है कि फील्ड इनसाइड तो यहाँ पे रहेगा बट दीज आर नेसेसरली यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब इक्वल स्पेसिंग में यहाँ पे होना चाहिए। जैसे इस वाले केस में हमें मिल रहा था वैसा कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। क्लियर। लेकिन इस केस में भी हमारा फ्लक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल फ्लक्स इज जीरो। क्लियर। टोटल फ्लक्स यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट, मूविंग टू ऑप्शन सी, ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस। ओके, हियर ये जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है, ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस, तभी जाके सभी चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर होना चाहिए तभी जाके हमें फ्लक्स मिला है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में चार्ज तो बाहर है इसीलिए हमें फ्लक्स यहाँ पे जीरो मिल रहा है, चार्ज अंदर में रहेगा और फ्लक्स हमें जीरो मिलेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। सपोज हम एक स्पीयर, सपोज यू आर टेकिंग वन स्पीयर, स्पेरिकल क्लोज स्पीयर, स्पीयर, and suppose at the center if I'll keep a dipole, if I will keep a dipole, that means this will be negative charge and this will be positive charge. तो डाइपोल के केस में जो आपका डाइपोल लेंथ दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर। तो इन दैट पर्टिकुलर केस दैट मीन्स इनसाइड द स्पीयर व्हाट इज द नेट चार्ज, क्यू नेट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों चार्ज यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना होगा, जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो है देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द गिवन स्फीयर, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पे क्यू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट इट नेट चार्ज इज जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो फाइनली फ्लक्स हमें कितना मिला है, जीरो मिला है। क्लियर। तो इसमें इस वाले पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चार्ज हमेशा बाहर में रहेगा, सरफेस के बाहर में रहेगा तभी जाके हमें फ्लक्स जीरो मिलेगा। क्लियर। चार्जेस अंदर में रहेंगे तब भी हमें फ्लक्स जीरो मिल सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में वो हमें जीरो मिलता है। क्लियर। अगर आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज या फिर सिंगल नेगेटिव चार्ज लोगे तो उस केस में आपको फ्लक्स जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर। So all charges must be outside the surface. It will be a wrong statement. That means here all the three are not justifying that the flux, closed surface integral flux through the given surface to be zero. Clear. So finally option D, none of this will be the correct option here. Moving to question number 83. If there were only one type of charge in the universe, तो हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज कितना है, दो तरीके का चार्जेस है हमारे पास, तो एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी एक टाइप का चार्ज है, दो टाइप का नहीं होगा। मान लो कि हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे। क्लियर। देन which of the following is correct? Clear. So here what is saying is that net flux through a closed surface is not zero. क्लियर। यहाँ पे
एनी सरफेस बोला गया है, एनी सरफेस कैन बी ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, क्लियर। एनी सरफेस कैन बी ओपन और क्लोज, बट यहाँ पे जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है इसमें ये बोला गया कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, दिस इंटीग्रल indicates means it is called as closed surface integral। अगर क्लोज सरफेस नहीं होता तो हम ये सर्कल यहाँ पे नहीं देते, क्लियर। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल थ्रू और यू कैन से फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नॉट जीरो, क्लियर। अगर एक ही चार्ज होगा, क्लियर, दो तरीके का चार्जेस नहीं है, तो एक ही चार्ज की वजह से फ्लक्स कभी जीरो नहीं हो सकता है। कोई भी सरफेस आप ले लो उसके थ्रू फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो क्लोज सरफेस अभी अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कि हम एक स्पीयर ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। हम मान लें कि दुनिया में मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसमें एक ही चार्ज है और वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस हम थोड़ा बहुत सरफेस के थ्रू शो कर लेते हैं। सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस हमारा ऐसा रहेगा, क्लियर। फील्ड लाइंस थ्रू द सरफेस विल लुक लाइक दिस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लोज सरफेस इसके थ्रू चार फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है और चार फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, क्लियर। दैट मीन्स इनकमिंग फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव है और आउटगोइंग फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर। ये क्या है हमारा इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स, एंड दिस वन इज आउटगोइंग फ्लक्स, क्लियर। तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, तो टोटल सम हमें कितना मिलेगा, टोटल सम विल बी, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू जीरो, क्लियर। ये हमारा केस है, क्लियर। तो ये वाले केस में तो फ्लक्स हमें जीरो मिला है, तो सिंगल चार्ज सिमिलरली हम सिंगल नेगेटिव चार्ज अगर लेंगे, मान लो कि वही केस हम लेंगे, सिमिलरली सपोज विल एज्यूम ए ऑब्जेक्ट, सपोज विल टेक ए क्लोज सरफेस टू बी लाइक दिस, बीन शेप्ड का एक क्लोज सरफेस हम लेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल टेक ए नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज के वजह से जो फील्ड लाइंस होगा, फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, ये अंदर की तरफ आएगा, फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड, clear। So that means here in this particular case also flux जो आपका इनकमिंग फील्ड लाइंस और आउटगोइंग फील्ड लाइंस, मतलब चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस आ रहा है, और तो मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन क्लोज सरफेस विल बी जीरो। हियर ऑल्सो नेट फ्लक्स थ्रू द फाई नेट विल बी जीरो, क्लियर। क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस अगर हम इस पोर्शन लेंगे तो ये वाला फील्ड लाइन अंदर आ रहा है तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, इस सरफेस के थ्रू अंदर आ रहा है और इस यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो क्लोज सरफेस ओवरऑल अगर हम लेंगे तो क्लोज सरफेस के थ्रू जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, क्लियर। तो सिस्टम के थ्रू जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या होगा, वहाँ पे जीरो होता है, क्लियर। सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, तो सिंगल चार्ज की वजह से फ्लक्स जीरो हो सकता है, अगर हम चार्ज को थोड़ा सा पास सिस्टम के पास रखेंगे तो वो वाला केस में होगा, क्लियर। सो दिस विल बी ए रॉन्ग स्टेटमेंट। देन क्लोज सरफेस और यू कैन से फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, चार्ज आउटसाइड द सरफेस तब जाके जीरो होगा। यस, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, अभी अभी एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड द सरफेस। अब हम उसी सरफेस को लेते हैं, ये स्फेरिकल सरफेस हम ले लेते हैं क्लोज्ड वन, और यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे मान लो, क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एज्यूम दैट क्यू कूलम, क्लियर। then what will be the flux through the given spherical surface, then flux will be equal to simply charge enclosed divided by epsilon naught, clear। तो यहाँ पे फ्लक्स हमें कितना मिला, चार्ज enclosed upon epsilon naught, that means this particular statement is also correct, clear। So both B and C are correct, that means here option D what it is saying that both B and C are correct, that means we will choose D over here, clear। Next, question number 84. A sphere encloses an electric dipole within it. The total flux across the sphere is, there is a sphere, spherical object or sphere you can take, and it encloses an electric dipole.
Suppose there is an electric dipole present inside the given spherical object. That means here negative charge, here positive charge. Clear? Positive charge of q coulomb. So a sphere encloses a electric dipole within the total flux through the sphere. तो what is the flux through the sphere? Clear? तो इस वाले पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे तो बेटर होगा आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए। पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे है डाइपोल का, ये वाला जो साइड है, तो इसको फिगर में हम थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, ये वाला साइड में हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। क्लियर? और इस साइड में हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लियर? दिस साइड विल बी नेगेटिव चार्ज एंड दैट साइड विल बी पॉजिटिव चार्ज। देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू इंडिविजुअल दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है। क्लियर? फील्ड लाइंस क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? बहुत टेढ़ा हो गया है, ऐसे बाहर की तरफ ये निकलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऐसे बाहर मिलेगा, यहाँ पे भी बाहर मिलेगा, यहाँ पे भी ऐसे बाहर मिलेगा। साइमल्टेनियसली जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ऐसे फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे रहेगा। क्लियर? तो ये आउटगोइंग फील्ड लाइन के वजह से फ्लक्स और ये इनकमिंग फील्ड लाइन के वजह से फ्लक्स, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ये एक कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स विल बी जीरो। और एल्स अगर हम गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ में क्या बोला गया है, फ्लक्स विच इज नथिंग बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार दैट कैन बी रिटर्न एज चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, तो चार्ज एनक्लोज यहाँ पे कितना है, प्लस पॉजिटिव चार्ज जो कि मान लो कि जो भी मान लो कि क्यू कुलम का है, और नेगेटिव चार्ज साथ में कितना है, प्लस माइनस क्यू कुलम का नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो टोटल यह कितना हो जाएगा, चार नेट चार्ज एनक्लोज जीरो। दैट मीन्स फ्लक्स ओवरऑल हाउ मच इट विल बी जीरो। सो इसमें क्या होगा, हमारा टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो ही होगा। तो बाकी सब हमें देखने की जरूरत है, हाफ दैट ड्यू टू सिंगल चार्ज, डबल दैट ड्यू टू, ये सब नहीं होगा। क्लियर? सो इट विल बी जीरो। क्लियर? टोटल चार्ज अगर जीरो है क्लोज सरफेस के अंदर में तो फ्लक्स भी जीरो होगा। ये एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85। ए पॉइंट चार्ज A point charge 4 microcoulomb is at the center of a cubic Gaussian surface. So we'll take a cubic Gaussian surface. So assume that cubical, all sides are equal. ए पॉइंट चार्ज इट्स एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। सो उसका मान लो कि सेंटर इस यहाँ पे कहीं पे है, सेंटर वाला पार्ट ऑफ सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑन क्यूबिक गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑन एज। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। So here in this particular case, then what will be the flux? So we know that as the charge of 4 microcoulomb is present inside the given and given cubical surface, and the surface is having एज लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। क्लियर? ये साइड जो है यहाँ पे हर एक साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर? so that means here in this particular case what is the flux? The flux will be nothing but simply चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगर चार्ज हमें दिया गया है तो फ्लक्स निकालने का ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो कि चार्ज नहीं दिया गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? सो फ्लक्स विल बी नथिंग बट क्लोज, अगर क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछा गया तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे? फॉर क्लोज्ड सरफेस,
क्लियर, क्लोज सरफेस के लिए। और ओपन सरफेस होगा तो ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली ई बार डॉट डी एस बार और सिंपली ई डी एस। ओपन सरफेस में हम सिंपल लाइन इंटीग्रल भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में, ये कौन सा केस में, दिस इज फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस फ्लक्स निकालने के लिए ओपन सरफेस केस में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे चार्ज दिया गया तो हम ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फाइनली व्हाट इज द फ्लक्स ओवर हियर, सो फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इज 4 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 4 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by epsilon naught. What is the value of epsilon naught? Epsilon naught is nothing but 8.85 into 10 to the power minus 12. So finally here in this particular case, how much will be getting? Will be getting, so let it be 10 to the 12. If it goes upward to the numerator, then it will be 10 to the 6. So 4 upon 8.85 into 10 to the power 6. Clear. So here in this particular case, if we divide 4 by 8.85, so here in this particular, if we'll take 8.85 to be approximately equal to 9. Clear. Approximately take it 9. So if we take approximately equal to 9, then divide 4 by 9. So how much we will get, or you can say it will be okay. So here if we take put this, so it will be 40. So 4 36 4, so डेसिमल की वजह से यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो फाइनली कितना होगा 436. So it will be it coming out to be how much? It will coming out to be 0.44 into 10 to the power 6. Clear. So 0.44, that means obviously here we have taken more than 8.85, that means 9 we have taken. So that means that value, if we take 8.85, actually 8.85, that means this value will be more than 0.44. It will be approximately 0.45. Clear. So here it will, how much will be getting, approximately will be getting 0.45 into 10 to the power 6. This is the flux. Clear. So if it is the flux, then we'll check answer. So answer is given like so, that means it will be 4.5 into 10 to the power 5. Clear. So Newton meter square upon coulomb. Clear. So 4.5 into 10 to the power 5, we have to check 10 to the power 5. Here 2.5 will not be, 4.5 for 2.5 not there, so 4.5 10 to the power 5. Option B will be the correct one. Option C 10 to the power 6 is given. Clear. तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दोनों, अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगा तो ये भी ऑप्शन आपका रिजल्ट में आ सकता है। क्लियर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. Okay, so here in question number 86, what is saying is that the electric field components in the given figure are, electric field यहाँ पे दिया गया है, E is equal to A x to the power 1 by 2, that means A root x, EY and EZ equal to 0, that means no component of electric field along Y and Z direction. Electric field exists along the horizontal direction, means field exists, field lines will be like this. Clear. So here in this particular, this is the case, and in that particular case, the value of this particular A is 800 Newton per coulomb per meter to the power 1 by 2 minus 1 by 2. The charge within the cube, if net flux through the cube. So what it is asking? It is asking the value of charge. Charge, how much charge will be there inside the cube if net flux is this one. So here in this particular case, so net flux is how much? 1.05 Newton meter square upon coulomb. Clear. This is the net flux. Then what will be the charge? How will you calculate the charge? So we know that from Gauss law, we will directly apply Gauss law. So from Gauss law, what we can write? The flux through the surface is nothing but charge enclosed divided by epsilon naught. That means the charge enclosed will be how much? Epsilon naught times the flux. Epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12 into what is the value of flux? The value of flux is 1.05. So here we have to do the mathematical calculation. So if we multiply,
So 8.05, that means approximately we can take it 9. Assume that it is 9, and here if we assume it to be 1, इसको थोड़ा कम कर लेंगे तो ऑलमोस्ट मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 9, 9 से ज़्यादा आएगा. क्लियर, इट विल बी ग्रेटर देन 9. क्लियर, इट विल बी ग्रेटर देन 9. क्लियर. सो क्योंकि हम यहाँ पे कितना बढ़ा रहे हैं, इसको 15 बढ़ा रहे हैं और इसमें घटा कितना रहे, 5 घटा रहे हैं, तो 15 बढ़ा रहे हैं तो मतलब तो अप्रोक्सीमेटली ये 9 से तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा. क्लियर. सो अभी चेक करना है कि जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा दैट इनटू 10⁻⁻12. क्लियर. सो हियर लॉजिकली हमें ऑप्शन से कैसे चेक करना है यहाँ पे. सो यहाँ पे 10⁻9.27 इंटू 10⁻12, 9.27 इंटू 10⁻12, तो 6.97 या फिर 6.97 तो यहाँ पे नहीं होगा. क्लियर. तो ये सब सी एंड डी देखने का जरूरत नहीं. तो फ्रॉम ए एंड बी व्हिच वन इज द करेक्ट वन. So here we'll check the power of 10. So power of 10 over here is -12. So option A will be the correct one. So it will be approximately 9.27 into 10⁻12. So the charge enclosed over here will be how much? Option A, 9.27 10⁻12 coulomb. Next, in question number 87, what it's saying is that the total flux through the faces of the cube with side of length A. So this is a cube which is having side A. Each side is A. Each side is A. If a charge Q is placed at corner A of the cube, what is the flux through the cube if a charge Q is present, Q coulomb charge is present at this particular corner, then what will the flux through the cube? Okay, fine. So here in this particular case, what we'll do, we'll see that we'll check that whether the charge is enclosed by the given cube or not. The charge Q is not enclosed. That means our first step should be we must enclose the charge. Why? Because we can apply the Gauss law formula, that is phi is equal to q upon epsilon naught for charge enclosed charges. Clear. Because in the formula of flux, that is phi is equal to charge enclosed divided by epsilon, मतलब चार्ज को वहाँ पे enclose करना जरूरी है, इसलिए हम जनरल क्या करते हैं, चार्ज को enclose करते हैं. तो चार्ज हमारे यहाँ पे ये कॉर्नर में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उसको enclose कैसे करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्यूब है, क्यूब का एक कॉर्नर पर यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है, तो कितना क्यूब चाहिए वैसा सिमिलर टाइप का, ताकि ये चार्ज पूरा का पूरा एनक्लोज हो. क्लियर. सो यहाँ पे लॉजिक क्या है, वी नीड मिनिमम 8 such cubes to enclose that चार्ज. तो उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हमें वैसा मिनिमम 8 क्यूब्स चाहिए, तभी जाके वो चार्ज एनक्लोज हो सकता है. तो उसको हम एनक्लोज कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल मान लो कि इसको ये साइड को थोड़ा बहुत हम इधर से बढ़ा लें, वी आर एक्सपेंडिंग, तो ये एक क्यूब यहाँ पे हमें मिल सकता है. क्लियर. ये एक क्यूब हो गया. क्लियर. और अभी हम इस साइड में भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. वी विल एक्सटेंड द एजेस. क्लियर. तो इसको थोड़ा बहुत हम एक्सटेंड इस साइड में करेंगे, इसको भी हम कर लेंगे थोड़ा. मान लो कि हम इसे एक्सटेंड इसको कर रहे हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हमें कितना क्यूब मिल सकता है, जस्ट चेक कर लेते हैं फिगर. तो ये हो गया 2 क्यूब साइमल्टेनियसली हो गया. तो ऐसा कितना, ये अभी कितना हो गया, तो चार्ज का आधा पोर्शन एनक्लोज हो गया है, तो बाकी आधा पोर्शन एनक्लोज करने के लिए हमें नीचे और कितना क्यूब्स चाहिए, वैसा 4 क्यूब्स चाहिए. क्लियर. नीचे सिमिलर टाइप का हमें और कितना क्यूब्स चाहिए, वी नीड 4 एक्स्ट्रा क्यूब्स टू
enclose the lower portion of the charge, clear, लोअर हाफ पोर्शन ऑफ द चार्ज, क्लियर। तो टोटल कितना क्यूब हो जाएगा, टोटल 8 क्यूब चाहिए हमें, क्लियर। तो इसीलिए तो 8 क्यूब हम इसको कैसे और इंक्लूड कर सकते हैं, विल एक्सटेंड दैट वन। अब मान लो कि ये तो कंप्लीट हो गया, क्लियर। अभी हम नीचे वाला पोर्शंस को देखेंगे, तो नीचे वाला पोर्शंस को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, विल टेक द फिगर टू बी लाइक दिस। ये हो गया। अब मान लो कि ये आ रहा है, क्या हो गया, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे, ओके। तो ये नीचे अभी क्या है कि इसको हम थोड़ा बहुत लेट मी एक्सटेंड दैट वन, ये हो गया। तो फिर इसको ये वाला नीचे वाला पोर्शन को थोड़ा हम ले जाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें ये वाला पोर्शन, क्लियर। तो टोटल हमें यहाँ पे कितना क्यूब्स चाहिए, टोटल वी नीड 8 सच क्यूब, क्लियर। ऐसा हमें कितना क्यूब्स चाहिए, 8 क्यूब। ये नीचे 4 और ऊपर में यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, क्लियर। तो टोटल वी नीड 8 क्यूब्स टू एनक्लोज दैट वन, क्लियर। तो देन हियर इन दिस पर्टिकुलर केस देन फ्लक्स flux we can write flux through 8 cubes will be how much, flux through 8 cubes will be simply how much, how can you write the flux through the 8 cubes, it will be charge enclosed divided by epsilon naught, clear। तो 8 क्यूब जो है उसको हम एक ही क्यूबिकल सिस्टम अगर एज्यूम करेंगे, क्लियर, 8 क्यूब को लेके एक ही क्यूबिकल सिस्टम अगर हम एज्यूम करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड चार्ज एनक्लोज इज हाउ मच, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू 1 क्यू, देन फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, एक ही क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, तो इट विल बी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। तो ये लॉजिक यहाँ पे जनरली अप्लाई किया जाता है। तो फ्लक्स विल बी हाउ मच, हमें एक ही क्यूब तो प्रोवाइड किया गया है ना, यहाँ पे क्या है, एक ही क्यूब हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो एक ही क्यूब से हमें फ्लक्स निकालना है, 8 क्यूब से फ्लक्स नहीं निकालना है। 8 क्यूब चाहिए उसको एनक्लोज करने के लिए, एनक्लोज्ड वाला क्यूबिकल जो पूरा जो सरफेस हुआ है उसके थ्रू टोटल फ्लक्स होगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उस पूरा 8 क्यूब से फ्लक्स अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ तो एक क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। So this will be the correct answer over here, q upon 8 epsilon naught, so option A will be the correct one, clear। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग भी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, क्लियर। तो यहाँ पे नीचे कितना क्यूब चाहिए, नीचे यहाँ पे 8 चाहिए और ऊपर में कितना है यहाँ पे मतलब नीचे यहाँ पे 4 चाहिए और ऊपर में कितना चाहिए, 4, क्लियर। तो ऐसा होते होते क्या होगा, ये थोड़ा ऐसा रहेगा, क्लियर। ये यहाँ पे 2 है और इस साइड में आपका 2 है, तो टोटल 4 हो जाएगा, क्लियर। ये क्लियर। तो ऊपर में 4 है, क्लियर। फिगर यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, सो यू कैन ड्रॉ इट इन योर ओन। Okay, so before going to question number 88, let me show you the actual figure of that previous one. So here this is the actual figure. The charge is present at the corner of this given cube, and that cube is enclosed by 8 cubes, clear. So this is the figure, you can uh, draw it. Next, in 88, which of the following statement is not true about Gauss law? First statement, Gauss law is true only for closed surface, clear. So Gauss law that can be applied to closed surface only, yes, that is correct, clear. And closed surface means it can be that closed surface will be of any shape, that may be symmetry or unsymmetry, clear। सिमेट्री भी हो सकता है, नॉट सिमेट्री अनसिमेट्री भी हो सकता है, तो एनी सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट, बट इट शुड बी क्लोज्ड, क्लियर। सरफेस सरफेस में बी सिमेट्री और अनसिमेट्री, में बी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक, बट
मस्ट बी क्लोज होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, द टर्म q on right side of the Gauss law includes the sum of all the charges enclosed by the surface. तो Gauss law में what actually Gauss law is that flux is nothing but closed surface integral E bar dot ds bar is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. Clear? So here in this particular case, this what is this q enclosed? Q enclosed is nothing but charge enclosed. What does this indicate? It indicates the charge enclosed, clear, by the Gaussian surface, clear. Charge enclosed by the Gaussian surface, clear. So here what it's saying is that the term q on right side of the Gauss law includes the sum of all the charges enclosed by the Gaussian surface, enclosed by the surface. That means this statement is also correct, clear. चार्ज एनक्लोज मतलब ऑल द चार्जेस वी हैव टू टेक, क्लियर। जितने भी चार्जेस सरफेस के अंदर में होंगे उन सभी को हमें लेना है, क्लियर, नॉट सिंगल चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा इसका एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज विल टेक ए क्यूबिकल सरफेस। अगर हम यहाँ पे क्यूबिकल सरफेस लेंगे तो इसमें मान लो कि कुछ चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है। सपोज चार्ज Q1 माइनस Q2 एंड Q3, something like these charges are present. Then what will the flux through that one? Phi will be equal to charge enclosed divided by epsilon naught. Charge enclosed will be sum of the all the charges Q1 plus minus Q2 plus Q3 divided by epsilon naught. So it will be Q1 minus Q2 plus Q3 divided by epsilon. So flux will be this one, clear. So here option B will be the correct one. Next, moving to option C. Gauss law is not much useful in calculating the electrostatic field when the system has some symmetry, clear. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि Gauss law is not useful in calculating the electrostatic field, clear. So generally we use Gauss law to find out the electrostatic field or to solve the difficult numericals to find out the electrostatic field. But here what is saying is that it is not useful in calculating the electrostatic field when the system has some symmetry. सिस्टम में अगर कुछ सिमेट्री है तो उस केस में ये गॉस लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। तो सिस्टम में सिमेट्री मतलब मान लो कि पॉइंट चार्ज। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स द गॉसियन सरफेस शुड बी व्हाट, इट शुड बी स्पेरिकल सिमेट्री, क्लियर। then only we can calculate the electric field at a distance r due to that point charge, clear. तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं स्पीयर विल बी ऑफ सेम रेडियस एज दैट ऑफ द डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो यहाँ पे फील्ड, तो उतना ही डिस्टेंस मतलब उतना ही रेडियस वाला हमें यहाँ पे क्या करना है, गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। दैट मीन्स द गॉसियन, दिस इज द गॉसियन सरफेस जो कि यहाँ पे क्या है, स्पीयर जो कि स्पेरिकल सिमेट्री, इट इज स्पेरिकली सिमेट्रिक। Similarly, if we want to find out the electric field due to line charge, suppose we'll take a rod, clear. If we'll take a rod which is positively charged or having some linear charge density, then what will be the electric field at this particular location? Electric field at some distance r, clear. Then in that particular case we have to construct a cylindrical Gaussian surface of, we have to construct one cylindrical Gaussian surface of radius r. We have to construct one cylindrical Gaussian surface of radius r, क्लियर। r रेडियस का यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, क्लियर। सो दैट मीन्स इट इज सिलिंड्रिकल सिमेट्री, क्लियर। सो सिमेट्री मे बी देयर मे नॉट बी देयर, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका सिमेट्री हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, बट गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, क्लियर। तो गॉस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री, तो नॉट यूजफुल ये नहीं हो सकता है, क्लियर। तो गॉस लॉ इज यूजफुल, क्लियर, वहाँ पे यूजफुल है, क्लियर। सो दैट मीन्स हियर ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्लियर, रॉन्ग स्टेटमेंट।
wrong statement, but and not true. That means here option C will be clear. Option C will be the correct answer for this question. Clear. Similarly, last statement what is saying, Gauss law is based on inverse square dependence on distance contained in Coulomb's law. गॉस लॉ जो है यहाँ पे बोला जा रहा है उसका कूलम्स लॉ के साथ क्या रिलेशन है. क्लियर. तो गॉस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन और इट इज समवट कनेक्टेड टू द कूलम्स लॉ. क्लियर. कूलम्स लॉ व्हिच जनरली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है जनरली कूलम्स लॉ. इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. क्लियर. कूलम्स लॉ जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है डिस्टेंस का स्क्वायर के ऊपर. क्लियर. तो गॉस लॉ उस कूलम्स लॉ के साथ क्या कनेक्टेड है क्या. यस कनेक्टेड है. हाउ इज इट कनेक्टेड. क्लियर. उसको हम चेक करेंगे यहाँ पे. तो एक्चुअली गॉस लॉ क्या है यहाँ पे. फ्लक्स इज नथिंग बट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी एस बार. क्लियर. एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर हम इसको इसी पॉइंट चार्ज के ऊपर यहाँ पे मान लो कि सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज. ये वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम यहाँ पे लिया गया है, इसी सिस्टम को हम लेंगे. क्लियर. इसी चार्ज के वजह से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे. वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर. क्लियर. एट ए डिस्टेंस आर मान लो कि, तो उसके लिए हमें क्या बोला गया. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया गया है. क्लियर. तो और कितना रेडियस का स्पीयर बनाया गया, जितना डिस्टेंस पर हमें कैलकुलेट करना है उतना ही रेडियस का हमें वहाँ पे वो स्पीयर कंस्ट्रक्ट करना है. क्लियर. अच्छा, तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे तो सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर तो फील्ड हर जगह वहाँ पे सेम होगा. तो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस. क्लियर. सो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे हम उसको ऐसे ही रखेंगे, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये एक छोटा सा गॉसियन यहाँ पे अगर हम मान लो कि डी एस स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस जो कि डी एस होगा उसको अगर लेंगे तो उसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा और फील्ड का भी डायरेक्शन ए वे होगा. क्लियर. तो दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो उसका मतलब थीटा वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा. तो ई डॉट डी एस कॉस जीरो, सो इट विल बी ई डी एस. क्लियर. तो सिंपली हम यहाँ को ई डी एस भी लिख सकते हैं. सो इट विल बी चार्ज एनक्लोज. चार्ज एनक्लोज कितना है, गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. सो दिस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कैन बी रिटन एज ई सरफेस इंटीग्रल डी एस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. 0 डिग्री इसीलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हम ई डी एस लिख सकते हैं. क्लियर. बट व्हाट इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस. क्लियर. ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन स्फीयर. तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. क्लियर. 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस क्यू विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हाउ यू कैलकुलेट बाई यूजिंग Gauss law. And from there suppose if we want to calculate the Coulomb's law, so that means what will be the coulombic force. मान लो कि उसी गॉसियन सरफेस जो है उसी सरफेस के ऊपर एक चार्ज Q हम यहाँ पे रखेंगे Q, या फिर एक मान लो कि हम टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख लेते हैं. उसी सरफेस के ऊपर एक टेस्ट चार्ज अगर हम वहाँ पे रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स होगा. So force will be nothing but Q naught into electric field at that point. So electric field that we got right now is 1 upon 4 pi epsilon Q by R square due to the point charge Q. So it will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught divided by R square. That means from Gauss law, this is Gauss law, and this is what, this is our Coulomb's law. This is Coulomb's law. Clear. So that means we have there is some connection between the Gauss law and Coulomb's law, where this Coulomb's law is inversely related to the square of distance. Coulomb's law यहाँ पे क्या है, inversely related to the square of distance. वही बोला गया स्टेटमेंट में कि Gauss law जो है वो एक्चुअली Coulomb's law के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि एक ऐसा लॉ है जो कि इन्वर्सली रिलेटेड है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के ऊपर. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गॉस लॉ. बट हमें यहाँ पे पूछा गया कौन सा ट्रू नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर.
Next, moving to question number 89. Here in this particular case, a point charge 20 microcoulomb is at a distance of 6 centimeter directly above the center of a square of side 12 centimeter. एक स्क्वायर है जिसका साइड यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और जिसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। जो पॉइंट चार्ज का जो वैल्यू कितना है और या फिर मैग्नीट्यूड कितना है, 20 माइक्रोकुलम। क्लियर? ओके, सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज आस्किंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो व्हाट विल द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें ध्यान में रखना है कि हियर इन दिस पर्टिकुलर केस चार्ज is not enclosed. If the charge is not enclosed, then our first next step should be what? Must enclose it. तो उसको वहाँ पे क्या करना है, enclose करना है। तो एक स्क्वायर शेप का यहाँ पे एक मान लो कि एक स्क्वायर शेप का स्क्वायर प्रोवाइड किया गया है जिससे 6 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर? तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो उसको एनक्लोज कर कैसे करेंगे, तो उसको एनक्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल टेक, हाउ विल यू एनक्लोज दैट वन, विल कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ए क्यूबिकल टाइप। क्लियर? ये कैसा होना चाहिए, एक क्यूब टाइप का होना चाहिए, तभी जाके ये चार्ज जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या होगा, एनक्लोज हो जाएगा। क्लियर? ये कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी चार्ज एनक्लोज हो रहा है। क्लियर? मान लो कि अभी ये चार्ज एनक्लोज हुआ है। क्लियर? So that means here in this particular case, what we can write over here, flux through the enclosed surface is how much, it is q by epsilon naught. enclosed surface जनरली यहाँ पे वो जो सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। तो फ्लक्स कितना हमें मिल रहा है, फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन। दैट मीन्स हियर व्हाट वी कैन राइट, फ्लक्स, ये जो एनक्लोज सरफेस इंडिविजुअली कितना सरफेस को लेके बनता है, 6 सरफेस, 6 ऐसे स्क्वायर जो प्लेट से उसको साइड बाय साइड जोड़ने से क्या होगा, एक क्यूबिकल सरफेस यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स through the cube is how much, it is q upon epsilon naught, that means charge enclosed divided by epsilon naught। इसको जनरल कैसे लिखा जाता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज एनक्लोज करा है, ये क्यू मान को चार्ज एनक्लोज करा है, तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना हुआ, तो दैट मीन्स उसको और कैसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू द 6 सरफेसेस, और 6 सरफेस मतलब 6 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर सरफेसेस, 6 स्क्वायर सरफेसेस इज हाउ मच, इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 स्क्वायर सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स फ्लक्स थ्रू 1 स्क्वायर सरफेस विल बी हाउ मच, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही स्क्वायर सरफेस जो नीचे वाला है, दैट मीन 1 स्क्वायर सरफेस मतलब वी आर कंसिडरिंग द बॉटम सरफेस, बॉटम। क्लियर? बॉटम वाला सरफेस, बॉटम हो कि साइड हो, जे कोई भी आप स्क्वायर सरफेस आप ले लो, तो उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। ऐसा नहीं कि खाली बॉटम वाला होगा, कोई भी सरफेस हो सकता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पे बॉटम के लिए पूछा गया है। क्लियर? बॉटम वाला सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। दैट मीन्स द फ्लक्स इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। so that we want to calculate। तो 1/6 क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया गया, द वैल्यू ऑफ क्यू इज 20 माइक्रोकुलम। क्लियर? वैल्यू ऑफ क्यू इज 20 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर? सो हाउ मच विल गेट, सो विल बी गेटिंग 20 divided by 6 into 8.85 into 10 to the power 6. Clear? So this we will get. So here if we do the calculation, so here it will be 2 10s are 20, 2 3s are 6,
So here approximately if we'll take this one approximately 9, so we can also divide this one. So 3, let us divide this one by 3, 3 ja 9, so 3.33 will continue 3.33 divided by 8.85. 3.33 divided by 8.85, so 8.85 let it be approximately 9. सो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ले जाएंगे और इसको अप्रोक्सीमेट 33 के आसपास, इसको मतलब 3.33 ऐसे ही पकड़ लो, तो ये कितना होगा, दिस विल बी, तो 3 तो मतलब 0.0 समथिंग विल गेट 0.36 और लाइक दैट विल गेट, so 0.36 into 10 to the power 6, so almost how much we'll get, so we'll be getting 3.6 something like into 10 to the power 5. Clear? So 3.6 or 3.7 like that we'll get 3.6 or 7 into 10 to the power 5 we'll get. Clear? So we'll check 10 to the power 5 order है और 3.6 7 ऐसे आसपास में, 10 to the power 5, so 2.5 10 to the power 6 नहीं होगा, 3.8 10 to the power 5, एक तो 3.8 इंटू 10 to the power 5 यहाँ पे दिया गया है, दूसरा 4.2 इंटू 10 to the power 5, तो 4.2 10 to the power 5 4 के ऊपर तो नहीं जाएगा. क्लियर? 2.93 से नीचे भी नहीं आएगा. क्लियर? तो फाइनली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा. क्लियर? कैलकुलेशंस यहाँ पे थोड़ा आपको अच्छी तरह से यहाँ पे करना है. क्लियर?